हेलो एंड वेलकम बैक एवन। सो अगर तुमने ये शब्द नहीं सुना कहीं रिडंडेंसी, ठीक है, क्लाउड रिडंडेंसी या फिर रिडंडेंसी, तो इसका एक्चुअली में जो साफ शब्दों में बोला जाए तो होता है कि भैया कम से कम चीज़ों में काम सॉल्व हो जाए हमारा, ठीक है। रिडंडेंट मतलब कि एक तरह से अगर आपदा पड़ी है तो बैकअप, जैसे कि हम बात करते हैं एक सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो क्या होता है जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर स्टार्ट कर लेते हैं, तो रिडंडेंसी हमारी बनी हुई है एक तरह से, ये समझ लो, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, हमारे पास ये छोटी सी वीडियो है और हम इस वीडियो का रिव्यू करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, Many organizations have moved from hardwired server rooms to operations that are run by cloud-based बिल्कुल। facilities. यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाउड बेस्ड ही रखती हैं, और मतलब इतना सर्वर रूम सारा कुछ करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। Because it provides both security and हाँ, flexibility. Cloud service providers have different availability zones, so that if one goes down, activities can shift to another. You don't have to maintain a whole data center with all the redundancy that entails. The cloud service बिल्कुल provider बिल्कुल। does that for you. यहाँ पे क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर ही सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं तुम्हें टेंशन नहीं लेनी कि आपदा आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनके पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है, और वो सारा कुछ साथ देखते हैं, ठीक है, एंड मल्टीपल रीजन्स भी होते हैं। सो नो नीड टू वरी। There are several ways to contract with a cloud service provider. You can set up the billing so that it depends on the data used, just like your mobile phone. And you have resource pooling, meaning you can share in the resources of other colleagues or similar types of industries to provide Resource data pooling for काफी अच्छा artificial ऑप्शन है। intelligence or analytic. So that's it for today, and I'll see you in the next video. Thank you for being here, and if you like this video you can subscribe this channel. Bye.